गुड इवनिंग राजेश्वरी। गुड इवनिंग पिनाकी। और यू कल नींद आ गई थी? बेटी का कॉल आ गया था तो मुझे छोड़ना पड़ा। उसे ऐसे भी शिकायत रहती कि मम्मी बात नहीं करती है ओह तो माय मैं कॉल छोड़ के थोड़ा मैं बात कर ली, नहीं तो फिर नाराज हो जाती। गॉड, आप लोग इसीलिए दुर्गा हो। दशहस्ते। वाओ। सो राजेश्वरी, हाउ इज लाइफ आफ्टर मिल्टन मॉडल? I have I'm trying to listen the video. I think it's a something you're talking about the hypnosis. It's all about How hypnosis, not something. it's totally hypnosis, now It's all whatever. about hypnosis, only about hypnosis. It's all about hypnotic language patterns. Like the Okay. way I'm using right now. I'm telling you that it's all about hypnotic language patterns. As you तो said, means Durga. आपको मैं कुछ मौका ही नहीं दे रहा हूँ कुछ और सोचने का। As you're telling us Durga. So it's Yes, also come in the hypnotic language. So this absolutely, is you only got it. Milton. Okay. Whatever the hypnotic language we are telling, using, Yeah. it's just is the Milton model. Okay. And Actually, throughout the yes. day we are using it. Throughout the day. हम जाने अनजाने में इसको यूज कर ही रहे हैं। You तो gave अगर so हम many जानबूझ examples. के यूज करेंगे तो we'll have more control on not only on our language patterns but also to talking to others. Okay. एक्चुअली कल मैं जो बात कर रहा था उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो ये कि हाउ you and I are using hypnotic language patterns even on ourselves and we don't Okay. even notice it. Hmm. And this is happening for a long time. For Hmm. example, all limiting beliefs, ये hypnotic language patterns ही है. Hmm. You told yourself that I cannot dance, Hmm. Hmm. है ना? And then you started believing in it. Hmm. Hmm. Yes. And this is all an application of self hypnotization. Hmm. आपने notice ही नहीं किया. And not only that, you are under that trance for such a long time that it has become a permanent tense for you. Yes. है ना? So many of us think that Milton model language pattern is all about talking to others. No, it fundamentally it is all about talking to self. अपने को देखना कि मैंने कहाँ कहाँ पे अपने आप को जादू करके रखा हूँ अपने ऊपर, Okay. and then I'm unable to come out of it, and मैं उसी को believe करूँगा यही सच है. Hmm. You know, I was dealing with a child, and what happened with this child was something very funny. You know, like in her young age, maybe when she was 6 or 7 years old, uh, उसके हाथ टूट गए. Okay. And somebody told her, मतलब उसको बोला कि अगर बचपन में किसी का हाथ टूट जाता है ना Hmm. तो हाथ सारा जिंदगी के लिए वीक रहता है. हाँ, वी यूज टू से लाइक दैट। ये है हमारा, हम लोग भी इस तरह से कि हाँ, है ना? जहाँ पे चोट लग जाती है तो वो पोर्शन वीक हो जाता है, ये हम लोग भी तो सुनते हैं, बच्चों बोलते को भी आ रहे अब हैं। सोचो, इट्स 6 or 7 year old चाइल्ड, उसके दिमाग में ये मैसेज चला गया हाँ। कि जब मेरा हाथ टूट गया है, सो नाउ थैंकफुली इट इज द लेफ्ट हैंड, राइट हैंड होता तो पता नहीं क्या होता. राइट हैंड का भी कहानी है, वो तो मेरे स्कूल में ही मैंने देखा था. उसका राइट हैंड टूट गया तो ही स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग इन लेफ्ट हैंड, इवेंचुअली ही बिकम अ लेफ्टी. हाँ। तो दिस चाइल्ड, व्हाट हैपेंड विद दिस चाइल्ड इज, इसका लेफ्ट हैंड टूट गया था, एंड एवर सिंस शी थिंक्स दैट शी इज नॉट, her left hand is weak. 6-7 साल जब उसको उम्र था तब ऐसा हुआ था. नाउ शी इज इन हर टीन्स एंड शी स्टिल बिलीव्स दैट कि मेरे हाथ में, हाथ कमजोर है, लेफ्ट हैंड में ये नहीं है वो नहीं है. यहाँ से कहानी शुरू हुई. हम्म। एंड देन आई वाज टेलिंग हर अबाउट दिस मिल्टन मॉडल लैंग्वेज पैटर्न. मैंने बोला देखो, तुमने खुद ही अपने आप अपने ऊपर जादू चला के रखा था. एवरी टाइम यू लुक एट योर हैंड, you tell your hand that you cannot, you actually tell your hand that you can't lift this, you cannot do this, you cannot do that. हम्म। So I told her to start using your left hand deliberately. मैंने उनको बोला कि आप मान लो एक ऐसा सिचुएशन है अभी
that's for some reason your right hand is not work, you cannot use your right hand, फिर आप क्या करोगे? अब तो आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, है ना, तो आप क्या करोगे? सो यू इवेंचुअली स्टार्ट यूजिंग योर लेफ्ट हैंड, राइट? यू हैव नो चॉइस। कमजोर है, लेकिन अब तो हम्म राइट हैंड ही मेरा काम नहीं करे फॉर सम टाइम, मे फॉर 2 months 3 months। तो हम्म लेफ्ट हैंड कमजोर है, लेकिन जोर तो है। कमजोर का मतलब क्या है? कम जोर है। जो जोर है लेकिन थोड़ा कम। हाँ कमजोर है। तो मैंने उसको बोला कि आप बोलना शुरू करो कि इसमें ज्यादा जोर है, ज्यादा जोर है, ज्यादा जोर है, ज्यादा जोर है, ऐसा बोलते बोलना शुरू करो। ये मत बोलो कि मेरा लेफ्ट हैंड कमजोर है, बोलो लेफ्ट हैंड ही ज्यादा जोर है, इसमें ज्यादा, मेरा ज्यादा स्ट्रेंथ लेफ्ट हैंड में ही है, लेकिन इसका इसका मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। इट ओनली टुक हर 2 to 3 weeks, only 2 to 3 weeks, and it is almost as good as normal for her। मतलब इतना अपने सब कुछ अपने दिमाग में ही है। सोचो, हम्म इट इज, दिस इज ऑल्सो लिमिटिंग बिलीफ। यस यस So I treated her from that context, it's a limited belief, limiting belief है कि I can't use my left hand। तो मैंने बोला कि यार इसको थोड़ा तोड़ो कि आप लेफ्ट हैंड को किस काम के लिए यूज कर नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, हम्म तो किस किस काम के लिए अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर सकते हो। एंड वंस यू फिगर दैट आउट, देन यू टेल योरसेल्फ, अगर मैं इसके लिए कर सकती हूँ तो ये भी इसके लिए भी कर सकती हूँ। श्योर श्योर It's like if I can lift a mug of water, I can even lift a small bucket of water as well। हम्म If I can lift a bottle of water जिसका 1 kilo weight होता है, तो I can lift a 2 kilo bottle also। यस यस है ना, तो तुम अपने हाथ से बात करो, टॉक टू योर लेफ्ट हैंड। एंड एकदम से ऐसे ऐसे ताला ना एकदम से खुलती है, यू नो, लाइक आप उसको कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, चाबी घुसा रहे हो, काम नहीं हो रहा, आपको पता है कि अंदर जंग लग गया है, फिर थोड़ा तेल डाल रहे हो, ये करो, एकदम खटाक से खुलता है। द मोमेंट इट ओपन, यू आर फ्री। हम्म So that was an amazing experience, and this girl actually called me up that day. Then when she discovered that she's not even experiencing that her hand is not working, she saying कि आज मुझे पहली बार ये मैसेज हो रहा है कि my hand is perfectly all right। मैंने उसको बकायदे ये भी बोला था अपने हाथ का एक्सरे करवा ले, हम्म है ना, दोनों हाथ का एक्सरे एक्सरे करवाओ, करवा के देखो क्या फर्क आ रहा है, अगर कोई फर्क आ रहा है तब बात करेंगे। हम्म तो शी लिटरली डिड दैट, हर पेरेंट्स, दोनों हाथ के एक्सरे करवाया, देखा कि कोई फर्क नहीं है। हम्म तो फर्क कहाँ पे? यहाँ पे। हम्म हाथ कब का जोड़ा जोड़ लग चुका है, उसमें कोई चैलेंज है ही नहीं। दे ऑल लुक सेम, बोथ द हैंड्स आर लुकिंग सेम, कहीं पे ऐसा कोई निशानी नहीं है कि तुम्हारा हाथ कभी टूटा था। So that is how we are using Milton model language patterns in our life. Many हम्म things, most of these limiting beliefs are impact of Milton models। हमने खुद ही अपने ऊपर वो जादू चला के रखा है, और अभी हमने बिलीव करना शुरू कर दिया कि यही सच है। जादू में यही होता है ना, मैजिशियन जो अभी आपको दिखाता है वही सच है। एंड if you notice carefully, like the topic that we are discussing today, we are going to discuss today, is all about logical levels of change। हम्म This is all happens as a part of it। It starts with environment, it ends with belief। Like if we look at what logical levels of change is all about, let me share the screen। Hi Rekha, good to see you। हेलो। आज सेम रेखा हियर। बहुत खुश है। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक हूँ।
खुशी रहती है रेखा। This is also an application of Milton model. सही है। रियली आई रियलाइज कि हम लोग मिल्टन मॉडल की दुनिया में ही जीने लग गए, Yes. जीते हैं। एग्जैक्टली, नाउ आई गॉट इट। Yes. ये होगा complex equivalence that now Rekha is laughing. She's in a very good mood. इसका हम उल्टा भी बोल सकते, Rekha is always in a good mood. That's why she laughs throughout the day. सही है। है ना? दिस इज ऑल्सो मिल्टन मॉडल। So we use a lot of complex equivalence throughout the day. एक के साथ दूसरे को ऐसे कनेक्ट कर दिया, जो कनेक्शन बनता नहीं लेकिन फिर भी हमने बना दिया. So let me share my screen. So here we go. See, लॉजिकल लेवल्स ऑफ चेंज में क्या होता है कि हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां से उठ के यहां तक पहुंचना, पर्पस में पहुंचना. ओके, सो पहुंचने का तरीका क्या है? लेट अस लुक एट द प्रोसेस. ठीक है, इट स्टार्ट्स विद वेयर एम आई. ओके, कि आपको अगर लाइफ में कोई भी परिवर्तन लाना है, द फर्स्ट थिंग इज टू फिगर आउट वेयर यू आर, जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट. कूल. फॉलोड बाय बिहेवियर, व्हाट आई एम डूइंग. मैं कर क्या रही हूं या कर क्या रहा हूं. देन कम्स कैपेबिलिटीज. व्हाट डू आई नो हाउ टू डू, व्हाट स्किल्स डू आई हैव. Then comes the values and beliefs, that what is important to me, what do I expect in a given situation. Then comes identity, who am I. And then comes the purpose, what am I here for, what am I part of this greater than myself. Now let us look at the practical aspect of it. You imagine a situation, actually think of a situation which you are trying for a long time but you are unable to get there. Any situation you can talk about it also, कि मैं ये इसको करने की कोशिश कर रही हूँ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, लेकिन कुछ कारण ये हो नहीं रहा. Any of this which is really important for you, yet you are unable to do it. Do you have anything? Yes, Pinaki. For me, designing the course, as I have the knowledge. Designing the course. Yeah. Designing the course for what? Which course? On habit and mindset. Habit and mindset. Okay. So how would you like to connect habit and mindset? How I would like to connect habit and mindset. हाँ, मतलब हैबिट और माइंडसेट के बीच में आप क्या कनेक्शन सेटअप करने की कोशिश करें? I am just trying that for cultivating any good habits. First of all, you should be having a right mindset, means growth mindset. And after that, with a great with that growth mindset, only whatever I am pursuing, yeah, whatever. Suppose I want to inculcate the habit of reading or exercising. First of all, I have to see the image that I have a good body and all that. That in the mind, that picture should be there. And after that, on daily basis, I have to program my mind first of all. What comes first, habit or mindset? I think a mindset come first. No, you shouldn't say I think, because if you're going to train mindset. Oh, no thinking, mindset. हाँ, ऐसा ना हो कि पिनाकी ने बोला कि यार माइंडसेट तो बाद में आता है, पहले हैबिट बनाओ माइंडसेट बनाने का.
And now you're confused. Oh my God, अब so you have to be very clear what you are going to talk about. Yes, yes, yes. Okay. First If of you, the if, mindset. if you Yes. want to say mindset count first, you stick to it. Hmm. And you should have all the reasons to prove your point that yes, this is why mindset comes first. Hmm. है ना? Even what you can say, reset your mindset. Hmm. है ना? And what you can say, चलो आपको हैबिट कौन सा बिल्ड करना पहले वो तय करो. Okay. Correct. So now Hmm. let us move that habit हमें जो build करना है, that is going to be our outcome orientation. Okay. और उस हैबिट तक पहुंचने के लिए मुझे शुरू जहां पे करना पड़ेगा, that is resetting my mindset. And then it's a journey from mindset to building that habit. Okay. Now let us look into this structure. Okay. Let me share the screen also. So here we are. So the first question comes is the environment. आप चाहते हो इसके ऊपर एक कोर्स डिजाइन करना. Okay. तो कोर्स डिजाइन करने के लिए फर्स्ट थिंग जो चाहिए तो वो था क्लैरिटी. आई बिलीव यू गॉट दैट क्लैरिटी नाउ. है ना कि आई नीड टू रीसेट माय माइंडसेट, बट बिफोर आई रीसेट माय माइंडसेट आई नीड टू फिगर आउट व्हिच हैबिट आई वांट टू बिल्ड. उसी के हिसाब से मुझे माइंडसेट रीसेट करना है ना. मुझे सिगरेट छोड़ना है, आई वांट टू क्विट स्मोकिंग. उसके लिए अगर मैंने ये माइंडसेट रीसेट किया कि आई हैव टू ईट लेस, देन इट वोंट वर्क. यू गॉट माय पॉइंट. हाँ, ईटिंग से तो कोई रिपीट रिलेशन दिस है. पॉइंट. क्या बोला पिनाकी आपने? आई You विल want ईट लेस. आई वुड ईट लेस. See, you have to, well, say, imagine you have to build two habits. For example, one is to quit smoking. Other Okay. one is could be maintaining optimal weight. तो Okay. दो अलग अलग टारगेट हो गए. Hmm. एक्चुअली दो अलग अलग हैबिट होंगे. Hmm. Now, if we talk about one habit, which is to quit smoking, and I say I need to reset my mind by eating less, this is not going to work to quit smoking. Yes. Oh, yes, yes. So first we have to be very clear कि हमें चाहिए क्या. अब माइंड रिसेट करने से पहले हमें ये पता करना है कि अभी ये सिचुएशन कहाँ पे है. वेयर वी आर राइट नाउ, वेयर एम आई. Okay. So for example, like now you need to build a habit. For example, you need to build a habit. For example, like say I want to create one slide of a course every day. मेरा जो कोर्स है उसके लिए मैं एक स्लाइड बनाऊं हर दिन. Yes. मान के लेते हैं ये आप हैबिट बनाना चाहते हो. ठीक है. अब उसके लिए हमें देखना पड़ेगा आप अभी किस हालत में हो. वेयर एम आई राइट नाउ. सो एज फार एज माय एनवायरनमेंट इज कंसर्न, वेयर एम आई राइट नाउ. तो वेयर आर यू राइट नाउ. I mean, in this slide, from this slide, I have to choose. I mean, that you're showing environment, behavior, capabilities, values. You have to design your slide. Okay, that I You have are to going to think. design one slide a day. Yes. The purpose is you have to design a course, and the course is going to give you an idea of how to achieve a particular habit by resetting your mindset. यहाँ तक क्लियर हो. ये वाला जो सेशन है रिकॉर्ड हो रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनो. Okay. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अनमोल चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. ठीक है. सो नाउ यू गॉट अ क्लैरिटी कि चलो अभी मैं कहाँ पे हूँ देखते हूँ. तो वेयर आर यू राइट नाउ. As far as designing this course is concerned, designing the slides are concerned, where are you right now? On the zero. मतलब you didn't even create the content, right? Yes, yes. यही पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, मान लेते हैं कि चलो यही पॉसिबिलिटी है कि मेरे दिमाग में आइडिया तो है लेकिन मेरे पास मैंने अभी कंटेंट ही नहीं लिखा. स्लाइड तो बात की बात है. I haven't prepared my content. ठीक है. So where am I? मेरे दिमाग में ये आइडिया है और इसके लिए जो कंटेंट चाहिए I haven't prepared that content yet. I'm thinking about it. Yes. So we can replace that with how can I create the content now. Now. Yes. ये एक स्टेप हो गया. हाँ.
उसके लिए अभी हमें बिहेवियर में चेंज करना पड़ेगा. Yes. अभी तक बिहेवियर क्या था? It is being governed by my limiting thoughts that I don't have time, or I don't have this, or I don't have that, whatever I don't have. Hmm. है ना? उसको हमने कैसे रिप्लेस किया? हाउ कैन आई. सो How हाउ can? कैन आई फोकस ऑन क्रिएटिंग द कंटेंट नाउ. Hmm. ठीक है. Hmm. स्लाइड्स. सो बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको यही सवाल पूछना होगा. Okay. वेरी क्लियर यहाँ तक? Yes. ओके. नाउ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, उसके लिए आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Hmm. आर यू केपेबल इनफ टू बिल्ड द कंटेंट फॉर दिस कोर्स. तो आप देख लो आपके पास कैपेबिलिटी क्या क्या है. सो बिहेवियर में आ गया व्हाट आई एम डूइंग, सो आई एम Hmm. ओनली थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ. सो मैंने उसमें एक Hmm. थोड़ा सा परिवर्तन लाया. हाउ कैन आई collect the content, how can I prepare the content. Hmm. Now content preparation के लिए I need the capabilities. So the questions that I can ask me is that what do I know how to do it, or what skills do I have. इसका दो पार्ट हो गया. एक हो गया ज्ञान कि मेरे पास इसका नॉलेज है कि नहीं. Yes. दूसरा है मैंने एक्चुअली ऐसा किया है कि नहीं. Hmm. Yes. क्या वाकई ही मैंने किया है. अगर मैंने किया है तो आई विल यूज इट एज अ मेटाफॉर. Hmm. अगर ऐसे मैंने दो घटनाएं किया तो आई विल यूज टू मेटाफॉर्स. इफ आई हैव डन फाइव, I will have five metaphors and they're ready with me. I know that these are the actions which proves that I had the capability not only to talk about it but also to demonstrate it. Hmm. हो गया. सो कैपेबिलिटी का दो हिस्सा हो गया. एक है मेरे पास इतना ज्ञान है कि नहीं, दूसरा मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है, क्या वाकई ही Hmm. मैंने करके देखा है. Hmm. Hmm. Did I actually do it? Hmm. Okay, if the answer is yes, then you really need to note it down. क्या मेरे पास just as pointers कि मेरे पास ये I have these capabilities and these are the experience that I have, that I did it. I reset my mindset here and I achieve this habit. I reset my mindset, I achieve this habit. I reset my mindset, I achieve this habit, like that. The way you are writing your LinkedIn blogs. Hmm. Yes. Yes. वो इसका एक नतीजा है. Hmm. ठीक है. वैसे मैं पढ़ता हूँ, सब में कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ. Thank you. ठीक है. So even the recent one I really liked, where you talked about 3 books and you actually showed that how you can read 3 books simultaneously. I really liked it. ठीक है. And you have also mentioned कि देखो इस बुक से हमने ये सीखा, इस बुक से हमने ये सीखा, इस बुक से हमने ये सीखा, और अगर आप ये हैबिट डेवलप करते हो तो you can also cultivate some richness, add more richness to your knowledge, add more richness to your life. I really like that. Fantastic. ठीक है. तो ये होगा capabilities. That Yes. what do I know Hmm. about how to do it and what skills do I already have. Hmm. Then comes values and beliefs. Hmm. कि चलो ये तो हो गया. Now values and beliefs. Values and beliefs क्या है? What is important to me, or what do I expect out of this. So when Okay. I'm thinking about designing this course, उसमें मेरे लिए important क्या है. Hmm. Okay. Hmm. And what I can derive out of it. What are my expectations? मेरे expectation क्या है. Hmm. So what I can give and what I can get. What is important for me in this whole thing? For example, if I can design this course, इसमें मेरे लिए क्या क्या important चीज हो सकता है. One of them could be, only you know, one of them could be that I can help somebody else also to develop a habit. Yes. My client satisfaction. Not only that, I can also help somebody to quit a habit. Hmm. Hmm. दोनों ही हो सकता है. Hmm. और उससे मुझे क्या मिलने वाला है. What do I expect out of it? It could be your satisfaction. See, I'm just taking the session, but otherwise I am supposed to ask you all these questions. It could be that मेरा satisfaction. It could be like my love, my respect to myself, my piece of my experience of freedom, my peace of mind. कुछ भी हो सकता है. What you are Yes. going to get out of it. Hmm. है ना? Out of the activity, not of the course.
कि अगर मैंने इस कोर्स को डिजाइन कर लिया तो उससे मुझे क्या मिलने वाला है. It is not about the course, it is about the activity that you are going to do to create that course. उसकी बात हो रही है. So you make sure that there is a difference between the course and the difference between the preparation of the course. So what we are talking about here is the preparation of the course material. Okay, then comes identity. What identity is all about is who am I? मतलब मैं कौन हूँ. So this is where eventually you are reaching कि मैं identify करने की कोशिश करूँगा actually मैं हूँ कौन. Like why I want this to design this course. Am I really capable? Yes, I am capable. Can I add value to people through this course? Yes, I can. उसमें मेरा beliefs क्या, about what beliefs I can bring into this whole thing, because I have already done that. I have my own experiences, so I can bring it. So who am I? I'm a person who can make a difference in somebody else's life by writing, by developing this course. You can think it that way also. It could be your identity. You really need to find out the answer. What identity we are talking about. Then comes the most important one, purpose. Purpose is that thing, Rajeshwari, that will drive you crazy somehow to take out time and get this thing done on priority. You're getting a sense of it? Yes, Pinaki. So you need to be absolutely clear. मेरा purpose क्या है? What is my purpose in life? When you're clear about your purpose in life, then you can see where the rest of these activities fit in. If they fit in your purpose of life, you will anyway you will take out time. आप इस सेशन अटेंड करने के लिए टाइम निकाल पा रही हो, आप लिंक्डइन में अपना राइट अप लिखने के लिए टाइम निकाल पा रही हो, कोर्स का मटेरियल डिजाइन लिखने के लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं. And I can train you how to design course materials. It's very simple. It's very simple. I use that technique also to design my course material. First is ChatGPT. आप उसमें तरीके का prompts डालो and you will get a basic structure of your course material right away. आप उसमें दो prompts डाल सकते हैं. एक prompt ये होगा कि for example content for training on mindset to habit. You can put this as a prompt. You can put this as a prompt that slideshow, content for slideshow. So content for training के लिए आपके पास कुछ आएगा, ideas आएंगे. Content for slideshow के लिए आपके लिए कुछ और idea आएगा. ऐसे आप दो तीन अलग अलग idea लेके you will get all this information. उसको लेके आप compile कर लो. आप तय कर लो आपको कितने slides बनाने हैं. So you decide I will design 5 slides. Okay, 5 slides. How I will make these slides. I'll keep them as simple as possible. It will just plain white background, or plain text. And as I do that, I will also preparing myself to how to narrate that. So even the narrations also you can get from ChatGPT. You can use a combination of ChatGPT and Gemini GPT. Gemini GPT जो वो Google का है. आप दोनों का combination use कर सकते. How? I am not getting it. This Gemini. Gemini What is it? GPT, gemini.google.com. जैसे ChatGPT है वैसे Gemini GPT है. तो ये Gemini कैसे वर्क करता है Gemini GPT? वैसे you give a prompt and it will give you the answer. And how let me show you. Okay. Let me show you how it works. ठीक है, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ. So it is like Chat GPT. it is like ChatGPT. What is the difference between two? उसका नाम है Gemini GPT नाम है. I'm just sharing the screen with you so you get an idea of what.
कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, Yes. Pinaki. ठीक है, GEMINI। तो ये हो गया जेमिनी जीपीटी, gemini.google.com। ठीक है, तो नाउ हम क्या करेंगे, मान के चलो से इसी का सेशन हम ले रहे हैं। ठीक है, लेवल्स ऑफ चेंज। सो लेट मी पुट समथिंग लाइक हाउ टू बिल्ड गुड छोड़ो, हाउ टू बिल्ड हैबिट्स बाय चेंजिंग माइंडसेट। ठीक है, ये आपने मैसेज डालो, देखो ये आपको मैसेज देना शुरू कर दिया। Changing your mindset is a powerful tool for building new habits. Here are some strategies to consider. Content आपका रेडी है। You start with identity shift. So it says reframe your self perception. Instead of thinking I am a lazy person, think I am someone who is committed to my goals. Align your actions with your desired identity. If you want to be a healthy person, make choices that align with that identity, such as eating nutritious food and exercising regularly. फिर दूसरा स्लाइड हो गया फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। तीसरा स्लाइड हो गया प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। चौथा हो गया एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। पांचवा हो गया विजुअलाइज सक्सेस। छठा हो गया प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। सातवां हो गया सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। यू गेट 7 स्लाइड्स रेडी। एंड हाउ सिंपली यू कैन डिजाइन द स्लाइड्स, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी ओपन PowerPoint. So here I am opening PowerPoint and let me open. चलो आज जो मैंने NLP का सेशन लिया, मैं उसी का PowerPoint का स्लाइड ओपन करता हूँ। ठीक है, it was about this one. Yeah. ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला स्लाइड। You can see my slide, right? No, you are seeing my screen, the other screen. Okay, let me change it. So now I will be showing my PowerPoint. And here we go. So can you see my PowerPoint? Yes. Yes, This is the first slide. उसमें मैंने एक फोटो लिया और नीचे टेक्स्ट डाला। ठीक है, देन ये एक स्लाइड है जहां पे मैंने अपने इंट्रोडक्शन डाला। देन मैंने एक पॉइंट डाला व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। ठीक है, फिर कुछ विजुअल आ गए और स्लाइड्स हम कैसे बना रहे हैं, यहाँ से हम स्लाइड बना रहे हैं। ऊपर सिंपल सा एक हेडलाइन है। दिस हेडलाइन इज दैट हेडलाइन, जो सब हेड वो आपको दिखा रहा है, फॉलोड बाय द कंटेंट। आप उस कंटेंट को एक एक करके डाल दो, हो गया आपका स्लाइड रेडी। Like I did it on structure of communication today. The structure of communication को मैंने ऐसे explain किया। The same thing which I explained you, मैंने उसी को थोड़ा सा different तरीके से उसको एक slide presentation बना दिया। Then I talked about importance of deep structure, which is a little deeper. That is not covered for teenagers, but we can cover it here. But deep structure के ऊपर ही मैंने 2 slide बना दी। And if you notice carefully, this entire content I picked up from the same PDF फाइल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने खाली उसी में से कंटेंट उठा के अपने तरीके से इसको सेटिंग कर दिया। सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। we use PowerPoint. हाँ, दिस ये पावर पॉइंट है। Okay. So We this is can use just, Google Slides also, na? Google Slides you can use Google Slides also. You Yeah. can use Canva also. ठीक है ना? सो ये हमारा चैट जीपीटी है या जेमिनी जीपीटी है, जो भी है। जस्ट सो यू कैन यूज वन ऑफ दिस जीपीटीज, जहां से आप लाइक एआई टूल्स, और फ्रॉम देयर यू पिक अप योर स्टफ। आपको जो चाहिए वो आप वहां से उठा लो, and then you put it in the
फाइल, जो भी आपको पावर पॉइंट बनाना तो पावर पॉइंट बनाओ, अगर कैनवा में बनाना तो कैनवा, सीधी बात है, आपको स्लाइड बनाना है तो यू कैन क्रिएट स्लाइड्स विद सिंपल प्लेन सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड, उसमें एक हेडिंग हो गया पेज का और उसमें 2 पॉइंट आ गए। अब ये हमने एक बार रन किया, उसी से हमें ये मिला। इफ आई रन इट अगेन आई विल गेट समथिंग एल्स, नाउ इट विल गिव मी समथिंग एल्स, थोड़ा सा चेंज करके देगा। आप यही प्रॉम्प्ट, द सेम प्रॉम्प्ट, हाउ टू बिल्ड हैबिट्स बाय चेंजिंग माइंडसेट, यही प्रॉम्प्ट अगर आप चैट जीपीटी में डालोगे तो आपको कुछ और मिलेगा। So now you have 3 sets of documents, 4 sets of documents, आप ये उसी को लेके अपना स्लाइड्स बना लो। यही प्रॉम्प्ट मेटा एआई में डालोगे तब कुछ और मिलेगा। हाँ यस, यही प्रॉम्प्ट आप मेटा एआई में डालोगे तो कुछ और मिलेगा, एग्जैक्टली। है ना। तो 3 जगह से आपके पास कंटेंट मिल गया। अभी हम जहाँ पे रुके थे कि मेरे पास कंटेंट बनाने का टाइम नहीं है या कंटेंट बनाने का काफी सोर्स मटेरियल नहीं है, नाउ यू हैव इनफ ऑफ इट। कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट लगेगा, 3 मिनट्स। हर एक में जाके ये कॉपी करना है और पेस्ट करना है। पिनाकी मुझे तो टाइम लगता है, मेरा नहीं 3 मिनट में बनता। नहीं 3 मिनट में आपके पास ये आ जाएगा, ये डेटा आ जाएगा, हाँ ये आ कंटेंट आ जाएगा। जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ। बनाने की बात नहीं कर रहा मैं, कंटेंट। कंटेंट मिल जाएगा, कंटेंट तो। एंड यू डिजाइन के मैं स्लाइड्स कौन क्या क्या स्लाइड लूंगा, उसका ऊपर स्लाइड का टाइटल क्या रखूंगा एंड कंटेंट क्या रखूंगा। कंटेंट विल बी ऑल दिस बुलेटेड पॉइंट्स। यहाँ से आप शुरू कर लो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल लेवल्स ऑफ चेंज। मेरा एनवायरनमेंट क्या है? मेरा एनवायरनमेंट बोल रहा है कि अभी मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, या ये चैलेंज है, वो चैलेंज है, कंटेंट लिखने के लिए मेरे पास टाइम चाहिए, मुझे दिमाग लगाना है। ठीक है, बिहेवियर चेंज हम क्या ला सकते हैं? वी कैन यूज ऑल दिस जीपीटीज। उसको खाली यही सवाल पूछना है, वो जवाब मुझे दे देगा। मेरे पास क्या कैपेबिलिटीज चाहिए इसके लिए, व्हाट कैपेबिलिटी, यस आई हैव द कैपेबिलिटी टू यूज जीपीटीज। एआई जीपीटी है, जेमिनी जीपीटी है, चैट जीपीटी है, फलाना जीपीटी है, धमकाना जीपीटी है। वी कैन यूज एनी ऑफ दिस जीपीटीज। What we can do now, we can use our values and beliefs to create, to align with that content. जो content वहां से मैं उठाऊंगा, I will pick up the content based on my beliefs and values, my experiences, and then it will be ready. So what you need to come up with, that what is your purpose behind it, and if you're very clear about the purpose behind it, the job is done. Can you see that happening? By the way, this is very important. Like, the most important question is, how can I make it happen now? Yeah, Aishwari? Yes, Pinaki. By having the clear purpose why I want to do. तो आप उसको खाली इस ढांचे में डाल दो। You just need to put into it in this structure. Starting with where am I, followed by environment हो गया, followed by behavior, that is what am I doing, आजकल कर क्या रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, followed by capabilities, what capabilities I have, followed by values and beliefs, how can I connect with my values and beliefs, followed by who am I, and finally followed by my purpose. What am I here for, or what am I part of, or greater than myself. सीधी पॉइंट है कि मेरा पर्पस इन लाइफ क्या है, उसके साथ ये अलाइन कर रहा है कि अगर ये अलाइन कर रहा है तो लेट मी टेक द एक्शन। पॉसिबल है? Yes, yes. रेखा, you can also come up with some thoughts which you want to do for a long time and it is stuck somewhere. हाँ exactly. It gave me clarity to me, to my thing also.
Like I, for a long time, I wanted to make a course for teacher training program. Okay. At the designing of this teacher training program for like slideshow also and for the booklet also. There are two Okay. types of content I want to make that. That is the thing I am thinking, not started, just an idea which is in my Okay. mind, evolving in my mind. ठीक है, fine. If that is so, what is the environment for you right now? Where are you? अभी situation क्या है इसका? Just I have just idea for that. uh, eh, some format also I am having because I took some sessions in schools. That Hmm. is some slides for that, some PPT for Hmm. that master class. I have that. I made that. Okay. So you have the content for the master class and you have taken some trainings. Yeah. Good. So now comes the behavior. So what are you doing now? ये आपका एनवायरनमेंट है. सब एनवायरनमेंट में आपके पास दो तैयारी है. एक है आपने सेशंस लिए और एक है आपने थोड़ा बहुत कंटेंट रेडी किया फॉर दैट मास्टर क्लास. The if I think that I think that my bar is 10, but I am at below 2, I would say. No, That that's is, I okay. have to. That's okay. So as far as environment is concerned, you basically talked about two things. One is you have taken some master classes, and second thing is you have content ready for taking another master class also. Yes. Okay, good. Now let us come to the behavior part. So what are you doing? So what are you doing about it? Nowadays, I am not so much doing, just I am working on my personal branding thing to reach that. But this this is not, I would say, direct link, heavy indirect link. This is working for indirectly, Hmm. not directly, because that is the different thing. I have to design my course and the PPT. That is different part of That you my have to purpose. do. That you have to do. What we Yeah. want, what I'm asking हाँ about is what हाँ are you that doing right now? अभी कर क्या रही हो? What are you doing अब now? अभी मैं उसको लेकर अभी स्टार्ट नहीं किया, अब छोड़ दिया मैंने बीच में. Okay, ठीक है. So good. That's okay. Now comes the capabilities. What capabilities do you have to do that? Yes. Yes, I believe that I can make it, but I have actually I would say it is like I procrastinated that thing because I am like priority basis, on my priority basis the other things are there. That Fair is why. enough. So that is the part of the behavior. What I'm talking about capabilities. उसको करने के लिए जो कैपेबिलिटीज चाहिए वो क्या आपके पास है? तो उसको करने के लिए क्या क्या कैपेबिलिटीज चाहिए? It is like just I have to start the thing, starting part, मतलब हाँ, तो आपको क्या कैपेबिलिटीज क्या क्या चाहिए उसको करने के लिए? To बस design that टाइम. course, what are the कैपेबिलिटी में capabilities you मुझे need? यही है कि जस्ट इनिशिएटिव लेना है, बस ये है मुझे. See, What? capabilities are all about करना. आपको क्या हम्म करना पड़ेगा उसके लिए? आप हम्म क्या कर रहे हो उसकी बात नहीं हो रही अभी तक. हम्म क्या कर रहे हो वो तो बोल दिया आपने बिहेवियर में कि मैं यही कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट इग्नोरिंग इट. हम्म लेकिन एट द सेम टाइम आप उसको करना चाहती हो, है ना? हम्म तो उसको करने के लिए आपको क्या कैपेबिलिटीज चाहिए? थिंक रैशनली कि उसको करने के लिए प्रोबब्ली यू कैन से दैट आई नीड टू सेट आउट सम टाइम. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. यस यस यस. ठीक है, वो मेरे नाउ प्रायोरिटी नाउ लिस्ट में नहीं है लेकिन मैं उसको करना भी चाहती हूँ, हाँ, so करना भी that चाहती हूँ. it comes to my priority list. Yes, actually I am working for the skill. I am learning the skills behind it actually, like Canva design and Hmm. Google Slides. I am Hmm. not that much good in that area yet. Hmm. That is why I am working on learning that skills. गुड. That तो मतलब is. इसको करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए होगा. एक होगा कंटेंट, Hmm. एक है डिजाइनिंग स्किल्स एंड एक है
slide designing. Mm-hmm. That's what you're talking about? Yes. Your Canva you are using for designing the slides, and Google Slides you are using for designing the presentation. I'm one step away from that Canva designing That's actually. okay. That's okay. But you know that these are the capabilities you need. Yeah. The only question, do you have this capability? If you do not have the capability, naturally your first objective will be to develop those capabilities. Yeah. You know? But is it actually so, or you can get it done by somebody else also? I want to do at my own. You want to do it on Actually. your own. Then it's okay. Yeah. Then it's okay that I am very clear that I want to do it on my own. I can get it done by somebody I else also. But yes, for I this take one, I help, want but to do it on my that is why I am delayed in this thing, because I want to do at my own. Because sometimes I have to do some changes, then it take much more time when I get it from the other person. I own. Got that. feel so. Yeah. Got that. Next comes the values and beliefs. So what is Yes. important to you as far as working on this project or getting this presentation done? What is important for you? तो it is like purpose thing हो गया ये पर्पस तक अभी पहुंचे ही नहीं, पर्पस बाद में है। like इसको करने के लिए आप इसको करने के पीछे मतलब why you are paying so much attention to it? ये होगा तो क्या होगा? because yes, because I want to bring change in the like what would I मतलब say, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या, वो thoughts चेंज of, तो कोई भी ला सकता है, आप क्यों वो परिवर्तन लाना चाहते हो? Why do you want to bring that change? Anybody can because do it. I feel that I have that confidence that I could bring that change in teachers and in teachers, like to be empathetic towards students so that they could learn much more in better way to unlock they could do better in better way to unlock the potential of students. That is my that is my belief. That is what I want to do. And I want to take this content and this course kind to various schools. So you mean to say that you have the competence, not only confidence, but you also have the competence to do it. Yes. Not the designing part, but the content and delivery part I'm talking about. The whole thing. You mean to say that I have the competence on this topic, on this subject. I just want to put it into a presentable form, and that is the something which I want to do on my own. I do not want to take help from anybody. Yes. Clear? Yes. And what are your expectations? In what way? Expectation means? Expectation from you. From me. Yeah. That I want to be confident in that way ki I could deliver that content to the teachers in an impressive manner, in effective manner, so that they could understand. They could, it is like they could apply, and I could see the outcome of that thing. Very good. Now I'm coming to the identity part, and this identity, both of you listen to me very carefully. This identity is what kind of person he or she may be who is going to do all these things. वो बंदा कौन होगा जो ये सब करने के लिए तैयार है, या वो बंदी कौन होगी जो ये सब करने के लिए तैयार है. I'm not talking about you. You also don't talk about yourself. Just think about ये ऐसा बंदा, मतलब ये कैसा बंदा होगा जो ये सब करने के लिए तैयार है, कोई जो passionate वाकई ही बंदा ही. इसको एक सही रूप देने के लिए तैयार है. I think it needs much more patience, passion for doing that thing. And yes, what would be that person, इतने कुछ होने के बावजूद भी that person will go and do it. वो बंदी तो मैं ही हूँ करने वाली. वो तो आप नहीं हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. ऐसा कौन होगी
what kind of person he or she may be, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इसको करने के लिए तैयार है. It's like whatever it takes, he or she will do it. अपनी बातरी नहीं होगी. वो कोई पैशनेट बंदा ही होगा जो करेगा ओके अबाउट इट. ओके, उसमें और क्या क्वालिटीज हो सकती है? एक तो हो गया पैशनेट, और क्या क्वालिटी हो सकती है? पैशनेट बहुत लोग होते हैं. He or she is having the purpose why she or he want to do his why. पर्पस अभी पर्पस पे नहीं जा रहे हैं, जस्ट पर्पस एंड के वन नीचे मोर हैं. थिंग, एम्पावरिंग बिलीफ भी होना जरूरी है. मतलब ऐसा मान के चलिए, ऐसा बंदा कौन होगा, मतलब आपके साथ मान के चलिए वो भी साथ में ही है, लेकिन फिर भी वो कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, या फिर भी वो कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हो, तो वो किस टाइप का बंदा है? इतना कुछ होने के बावजूद भी that person is doing whatever supposed to be done and he is moving ahead. Highly determined, having a बर्निंग डिजायर. desire. मतलब उसके बारे में आप क्या बोलोगे? मान के चलो आप किसी के साथ तैयारी कर रहे हो मैराथन दौड़ने का, तो आपने दोनों ने इकट्ठे शुरू किया, then after 1 week you notice that you are only walking for 5 kilometers and he is actually running 5 kilometers or she is running 5 kilometers, तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे लोगों को? He is much more passionate, more like. क्या क्या शब्दों का आप इस्तेमाल करोगे? जैसे आप probably I would have first thing probably I would have said that he is very committed to his purpose. He is very or she is not only passionate, she is also working towards it. She is committed, she is consistent, she is persistent in her activity. She is doing something extra every day. That's why I'm still walking and she is running. We can use the word like grit. तो these are the identity of that person. आप उसके बारे में जब लोगों से बात करो, अरे यार वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, she takes care of her health, she also goes to bed right at 10 o'clock so that she can get up early in the morning at 4 o'clock, or maybe she goes to bed at 9 o'clock. Disciplined. Yes. Discipline, yes. This is very important word and very powerful word. Determination. Discipline. Disciplined है, determined है, consistent है, caring है, she is taking care of herself. है ना? Correct. She is Discipline good के enough to बिना, inspire, motivate and encourage herself. किसी और be किसी in the it should be first thing actually. Discipline. Yes, thank you for reminding. Now that you have identified कि उस बंदे में ये सारा qualities होना चाहिए, ask yourself आपके अंदर है क्या? Yes. Correct. Discipline, determination. These 2 D's are very important. Absolutely. ये आपको करा देगा सब कुछ बाकी. Discipline and determination. इसका हम बोलते हैं D3, 3D या D3 बोलते हैं. Determination, discipline and I forgot the third word. अभी बोल रहा हूँ. Determination, discipline and how did I forget it? Discipline, determination and dedication. Dedication, discipline, yes. Determination and dedication. Discipline, determination and dedication. Dedication. Yes. कोई भी काम कोई भी बंदा तभी कर सकता है जब उसके अंदर ये तीनों चीज होता है. और ये तीनों चीज में से कोई भी माइनस नहीं होना चाहिए. तीनों चीज का इकट्ठे प्रेजेंस होना जरूरी है. मैं इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने क्लासरूम में लगाने वाली. डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन. हाँ, डिसिप्लिन को फर्स्ट पे रखते हैं. डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन. वाह, वेरी नाइस. And now the question comes, am I disciplined, determined and dedicated to do this work? I may be that person in doing something else,
लेकिन इसको करने के लिए क्या मैं ऐसा हूँ? अगर हूँ तभी ये मेरे लिए पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। नाउ इन तीनों में से मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी, तीनों में मतलब से एक भी माइनस नहीं होना चाहिए, हाँ तीनों का एक भी तीनों ही माइनस नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये तीनों आपके टांग है उस टेबल का, हम्म एक भी नहीं होगा तो टेबल खड़ा नहीं होगा, वो स्टूल करेक्ट। खड़ा नहीं होगा, वो स्टैंड खड़ा नहीं होगा, हम्म वो स्टैंड स्टैंड नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, हम्म है ना? You cannot have a bipod stand. It is always a tripod stand. हम्म हम्म। है ना? इसको Then हम comes. इसको मेटाफोर शो कर सकते हैं ना, ट्राइपॉड स्टैंड के ये 3 पाँव है। इसका। Absolutely, that is a metaphor. That's why I used it. कि करेक्ट। वो ट्राइपॉड स्टैंड तभी स्टैंड की तरह काम करेगा जब उसके पास तीनों लेग्स हैं। हम्म बाइपॉड स्टैंड कुछ होता नहीं, बाइपॉड स्टैंड खाली ह्यूमन बीइंग है, हम्म। ह्यूमन खाली ह्यूमन बीइंग है जो बाइपॉड स्टैंड है, जो दो पैर से खड़े हो सकता है। हाँ हाँ, सिर्फ वो ह्यूमन बीइंग ही बाइपोड है, बाइपेडल लोकोमोशन होती है ह्यूमन बीइंग में। एग्जैक्टली exactly. है ना? नाउ कम्स द लास्ट पार्ट कि उस बंदे का पर्पस क्या होगा अगर वो वाकई ये सब करने के लिए तैयार है। हम्म जो बंदा डिसिप्लिन, डेडिकेटेड एंड डिटरमिन्ड है इसको करने के लिए, उसका जिंदगी का पर्पस क्या होगा, या उसको इस काम को करने के पीछे उसका पर्पस क्या होगा। हम्म। And when you Ac- identify that purpose, this purpose may differ depending upon the activity that you want to do. And once you identify that purpose, immediately the question comes, क्या मेरा पर्पस ऐसा कुछ है? तो जब हम्म तक ना वो मेरा पर्पस बनता है तब तक बाकी का एक्टिविटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे पास। करेक्ट करेक्ट। और यही कारण है वो काम अभी तक नहीं हुआ। हम्म ठीक है, इंटरेस्टिंग। Actually, this session is like reminding the things I want to do in my life. It is like that. Reminding my purpose also, reminding the. एब्सोल्युटली, Hmm, लॉजिकल लेवल्स ऑफ चेंज जो है, इट्स अ वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। hmm, इसको आज तक हमने जिस दृष्टि से देखा है, ये इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल नहीं है। इसको जिस दृष्टि से हमें अभी तक दिखाया गया है, इतना सिंपल नहीं है। ये बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि like you know that why you are not unable to do certain things in life, though you know that it is important for you. जैसे कई बार हम सोचते रहते हैं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है ना, स्टार्ट भी कर देते एग्जैक्टली हैं exactly. लेकिन करना तो हम है लेकिन करने का मौका नहीं मिल रहा। मौका नहीं मिला, ये हम ब्लेम करके छोड़ देते हैं कि मौका नहीं मिला। है ना? We have to come out of that blame also, blame game, and think about, actually I have to think about seriously about these all pillars of this logical levels of change. एग्जैक्टली exactly. और ये इतना पावरफुल है रेखा, ये अगर आप बच्चों को सिखा देते हो ना, हम्म उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, उसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, हम्म उससे कोई गलत काम कभी होगा ही नहीं, हम्म क्योंकि गलत सोच आने का मौका ही नहीं मिलेगा तो गलत काम करेगा कैसे। हम्म। वो तभी बोलते हैं ना कि गुड, आपको बैड हैबिट छोड़ने पे एफर्ट लगाने से ज्यादा आप गुड हैबिट्स पे एफर्ट लगाओ, अपने आप छूट हम्म, जाएगी बैड हैबिट। ठीक है, इंटरेस्टिंग। राजेश्वरी, अच्छी लगी सेशन? हाँ, यस। प्लीज शेयर दिस स्लाइड। हाँ, ये तो मैं आपको दे ही दूंगा, ये मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा। नहीं, सेशन वाज और रियली वंडरफुल। एग्जैक्टली, आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड लाइक शी वांटेड टू नो कि आप जो एनएलपी फॉर टीनेजर्स कर रहे हो उसमें और एनएलपी प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर कोर्स में क्या फर्क है।
So I said that, see, फर्क नहीं है basically, ये this is a bridge. Like once you become a NLP practitioner, you need to apply it in your life. तो आप कैसे life में apply करोगे? That is what I am talking about when I am talking about NLP for teenagers. So this comes somewhere in between. इससे कम से कम ना आप इसको अप्लाई करने का आपको सारा एनवायरनमेंट दिखेगा, मैं क्या कौन सा चीज कौन सा कॉन्सेप्ट को मैं कहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता हूँ. And once you discover that, once you become a masterpiece in that, then you may choose कि आप मैं मास्टर प्रैक्टिशनर का कोर्स करूँ या ना. नहीं तो मैंने देखा लोग मास्टर प्रैक्टिशनर का कोर्स भी कर रहे हैं, but eventually they are back to some square one because they are not practicing. They do not apply हाँ, प्रैक्टिस actually. करने का ना मौका मिल रहा है ना वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में आके अटक गया, हम्म उसके ऊपर वो बढ़ ही नहीं पा रहा है. All right, if you have any question you can actually ask me. So I would recommend don't ask any question. Question पूछना तो अपने आप को पूछो. Yes. NLP actually Pinaki, I would say one thing. एक्चुअली एनएलपी का मीनिंग आपने समझाया है, जीना सिखाया है. एनएलपी, अदरवाइज अभी तक इससे पहले तो हम इट वाज लाइक कंटेंट, जस्ट कंटेंट कि ये Yes. होता है, ये लेक्चर दे दो, वो लेक्चर दे दो. नो, एक्चुअली हाउ टू लिव दैट. You have to live that, inculcate into yourself so that you could project yourself in that way. That is the thing. Really, Very true. Very true. really, I'm इनफैक्ट really I'm आप blessed. दोनों के साथ जब ये मैं बैच 2 कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया, which I am toying for last 1 week, and that new idea is that this NLP for teenagers program I want to do only for school teachers and college teachers rather than students. Hmm. बिकॉज मैंने देखा कि जब मैं यही प्रोग्राम स्कूल में करूँ मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग इट डायरेक्टली विद चिल्ड्रन. Hmm. व्हेन आई ट्राई टू डू इट ऑनलाइन इट डिडंट वर्क फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों का टाइम नहीं होता है, उनको फिर अपनी Hmm. प्रायोरिटीज रहती है, एंड दे डू नॉट वांट टू बॉदर देमसेल्फ विद सम मोर एजुकेशन, एंड फिर टाइमिंग का चैलेंज आ जाता है, फिर इनको कोचिंग सेंटर्स चलता रहता है, ट्यूशन सेंटर चलते रहते हैं, होमवर्क रहता है, so naturally they can't take out time. Hmm. So I Not easy. thought about redesigning this whole program to work with teachers, and I am actually doing it with you as I am doing it. You must have noticed that something differently I am doing over last couple of weeks. Hmm. Hmm. It's far more about application orientation rather than just about concept orientation. So I want to take it to all teachers. Yeah, it's a good idea, Pinaki. है ना. अब चैलेंज है कि मैं बोकारो में और किसी के पास नहीं लेके जा सकता, तो बोकारो में ये काम आप ही को करना पड़ेगा, और मैं आप फुल्ली तैयार हूँ आपको सपोर्ट करने के. Yes. सेम विद लुधियाना. नहीं नहीं, ये तो बस पिनाकी जानते हो चैलेंज क्या है, बस वो क्रॉस करने के लिए उस पे थोड़ा सा माइंड लगाना है. हाउ टू रीच, हाउ टू कन्विंस देम. रेखा, खाली इसी के ऊपर काम करना. दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वर्क. किसी को कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं. अगर आपकी तैयारी पूरी है, आपको अपने आप लोग मिल जाएंगे आपको सुनने के लिए. And one really, and one more thing I was relating to it only, Pinaki, that I was thinking since last some, matlab, I would say few days. It was like राजेश्वरी आप भी सुनना, इंटरेस्टिंग मेरे माइंड में जो आ रहा है. That Yes. is there should be an alignment of teacher, student and parent. क्या है आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं, ना तो स्टूडेंट का पेरेंट के साथ अलाइनमेंट दिखता है, ना ही स्टूडेंट का टीचर के साथ ऐसा अलाइनमेंट दिखता है, मतलब मिसिंग है कहीं ना कहीं. और ना ही पेरेंट का भी टीचर के साथ उस तरह का अलाइनमेंट मुझे दिखता है.
जैसे मैं तो एक ही सब्जेक्ट ले रही हूँ, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आते हैं, बट आई एम फीलिंग दैट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट बाय बिहेवियर ऑफ दैट स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। इट शुड बी लाइक अ ट्रायंगल, मतलब एंड पर्पस मेरा भी वही है, मतलब स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का भी वही है और टीचर्स का भी वही है कि बेस्ट आउटकम देखे स्टूडेंट्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। बट ये कहीं ना कुछ गैप के कारण ये हो नहीं पा रहा है। तो उस डायरेक्शन में मैं जैसे इसी ये सोच के मैं इसमें आई हूँ काम करने। तो मेरे माइंड में इसी को सोचते हुए एक और बात आई कि एक्चुअली स्कूल्स में बोलते हैं ना, चाइल्ड काउंसलिंग का एक जोन होना चाहिए, चाइल्ड काउंसलिंग का होता नहीं है, सभी स्कूल में होना चाहिए। बट मेरे माइंड में एक और चीज आई है, एक्चुअली पेरेंटिंग सेशन भी होने चाहिए। हम बच्चे को तो दोष देते रहते हैं, ये नहीं करता, टीचर भी पेरेंट्स भी हमेशा बच्चे को ही। आजकल के बच्चे तो पता ही नहीं क्या हो गए, वही मिल्टन मॉडल यूज करी जाते हैं। आजकल के बच्चे तो सुनते नहीं है। एक्चुअली ये शुरुआत हम्म। कहाँ से हुई है? ये घर से हुई है, पेरेंट से हुई है ना? बिल्कुल, तो मतलब पेरेंट्स एब्सोल्युटली। के लिए और पेरेंट पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए कॉर्नर होना चाहिए स्कूल्स में एक्चुअली। वो बहुत जरूरी है। जब बच्चे के लिए होता है ना बच्चे की काउंसलिंग, तो पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग जरूरी है। द इट विल इट इज लिटिल, मतलब हो सकता है स्कूल के लिए वो बिल्कुल एक्सपेंसिव पॉसिबल है। है। हम्म। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ओवर लास्ट 1.5 years का, ऑलमोस्ट 2 साल ही हो गया। तो 2 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा विद वर्किंग विद दिस टू स्कूल्स, मैं 2 स्कूल के साथ काम कर रहा हूँ। इफ यू वर्क विद पेरेंट्स, सॉरी, इफ यू वर्क विद टीचर्स हम्म। एंड स्टूडेंट्स टुगेदर, हम्म। आपका सारा काम हो जाएगा। हम्म। क्योंकि क्या हो रहा है, पेरेंट्स खुद मेरे पास आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए। हम्म। उनको महसूस हो रहा है कि भैया हमें भी चाहिए अपने आप को, अपने ऊपर काम करना। तो So they इसी can see the difference in the children. हम्म। When they are noticing the difference in their children, they are also thinking कि हमें भी कुछ अपने आप में कुछ हम्म। बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि खाली चिल्ड्रन पे काम करने से बनती नहीं बात ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आपको उसकी सराउंडिंग्स भी तो क्रिएट करनी है ना, वो एब्सोल्युटली। सी, सराउंडिंग आप भी बच्चों के ऊपर काम करें, पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर काम करें, बच्चा बेचारा कहाँ का वही तो, जाएगा? वही ना, हमेशा उन्हीं को आजकल के तो बच्चे एब्सोल्युटली, पता नहीं क्या हो गए हैं, ऐसा सब एब्सोल्युटली, बोलते हैं। है ना? मैं तो एब्सोल्युटली। बहुत ही सुनती हूँ आजकल के बच्चों में, भाई बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत ऐसे हो गए हैं। वो क्यों ऐसा है, मैं सोचती हूँ कई बार, क्यों हुआ बिकॉज है ऑफ ऐसा? मिल्टन मॉडल लैंग्वेज पैटर्न्स, आप वो हम्म। कह रहे हो, इसीलिए आप वो इवेंचुअली एक ही बात आप बार बार और बोलते भी नहीं पिनाकी, होता क्या है, वो टेक्नोलॉजी को दोष देते रहते हैं। टेक्नोलॉजी ने बिगाड़ दिया, टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया। भाई आप भी तो यूज कर रहे हो ना टेक्नोलॉजी। तो मतलब मैं इस, पता नहीं कैसे, मतलब इस चीज में मैं कुछ रियल में कुछ डेडिकेटेडली करना चाहती हूँ इस तरीका यही है। आप कह रहे हो टेक्नोलॉजी, तो वो वही एनवायरमेंट है ना। हम्म। आप तो यहीं पे अटक गए हो, नीचे पड़े हो। हम्म। करेक्ट करेक्ट, चलिए करते हैं। थैंक यू ये ना फॉर शुरुआत ही चार्जिंग मी। यहाँ पे है कि वेयर एम आई, पहले पता तो करो आप कहाँ हो। हाँ आप एग्जैक्टली कहाँ? हम तो अपना 100% डालें ना। फिर आगे एग्जैक्टली, यूनिवर्स देगा हमें। एग्जैक्टली। ओके। ऑलराइट, ओके, गुड बाय बाय। नाइट, गुड नाइट, बाय। बाय बाय।